three causes. Three sense three classifications. ठीक है? There's cardiovascular causes, there's respiratory causes, and there's gastrointestinal causes. ठीक है? तो सबसे पहले लिख दो कार्डियोवास्कुलर कॉजेस सीवीएस. ऑलराइट. सीवीएस में सबसे पहले लिख दो एंजाइना. ठीक है. एंड जस्ट टेल मी इफ आई एम गोइंग फास्ट एट एनी पॉइंट. ठीक है. मैं टेक्स्ट का चैनल देख ही रहा हूँ. ठीक है. तो सीवीएस में सबसे पहले एंजाइना लिख दो. एंजाइना के बाद लिख दो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है. Endocardial infarction are basically the same, just that MI is a more serious form of angina. There are subtle differences in both. So वो मैं बाद में बताऊंगा मैं तुमको. Alright. So angina infarction लिख दो. Third cause very important. Aortic dissection. Aortic dissection, also known as dissecting aneurysm of the aorta. ठीक है. Aortic dissection लिख दो. Alright. And fourth cause is pericarditis. Alright. Pericarditis. So four causes in CVS: angina, myocardial infarction, aortic dissection, and pericarditis. ठीक है. Let us come to respiratory causes. If you have attended the last two sessions, these are the same usual suspects. Pneumothorax, जल्दी लिख दो. Pneumothorax. Pneumothorax के बाद pulmonary embolism. Pulmonary embolism के बाद pneumonia. Pneumonia. And pneumonia के बाद pleural effusion. So I'll repeat फटाफट से. Respiratory causes में भी चार है. There's pneumothorax, there's pulmonary embolism, there's pneumothorax, sorry, there's pneumonia, and then there's pleural effusion. Okay? So four causes: pneumothorax, pulmonary embolism, pneumonia, and pleural effusion. All right. Let us come to gastrointestinal causes. Okay? So have you guys heard of Boerhaave syndrome? In case you guys don't know this spelling, Boerhaave syndrome. ठीक है. So basically क्या होता है पता है? So what happens in Boerhaave syndrome? I'll give you a quick summary of what happens in it. So basically, this condition is seen in alcoholics. ठीक है. So like there's this person, he's drinking a lot. ठीक है. And after a period of time, alcoholics start vomiting. ठीक है. It may be due to the alcohol itself. It may be self-induced vomiting. ठीक है. What these people do is they vomit along a closed glottis. ठीक है. So basically imagine yourself vomiting while your mouth is closed. ठीक है. So उसकी वजह से जो है इंट्राइसोफेजियल प्रेशर एंड उसकी वजह से इसोफेजियल रप्चर हो जाता है. ठीक है. Did you guys get it? So if you're vomiting against an open mouth, basically you're letting the vomit out. ठीक है. So तुम्हारा esophageal pressure पड़ेगा नहीं. ठीक है. But if you're vomiting against a closed glottis, this is a technical term. In layman terms, you can call it as vomiting against a closed mouth. ठीक है. So I'll put it down. Vomiting against closed glottis. ठीक है. All right. ठीक है. तो उसकी वजह से इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाता है इसोफेगस का, इसोफेगस का रप्चर हो जाता है. सो बोरहाव सिंड्रोम इज बेसिकली अ फैंसी टर्म फॉर इसोफेजियल रप्चर. ठीक है. सो ब्रैकेट में लिख दो छोटे से इसोफेजियल रप्चर, बोरहाव सिंड्रोम. ठीक है. द सेकंड कॉज इन जीआईटी इज इसोफेजियल स्पैज्म. ठीक है. इसोफेजियल स्पैज्म. ठीक है. सेल्फ इंड्यूस्ड स्पैज्म. डोंट वरी अबाउट उसका थियरी एस्पेक्ट, यू डोंट नीड टू नो इट. ठीक है. इसोफेजियल स्पैज्म. उसके बाद लिख दो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD. GERD, GERD. All right, GERD. And the last cause is peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease. ठीक है. So GIT में I'll repeat the causes फटाफट से. Boerhaave syndrome, esophageal spasm, esophageal reflux disease, and peptic ulcer disease. All right. So basically three main categories. हर एक category में चार causes. No, there was nothing about serious causes. नहीं. There's only three categories: CVS, RS, and GIT. ठीक है. And हर एक में चार चार है. ठीक है. चलो, let us move on to proper history. ठीक है. All right, so we'll follow the usual system जो मैं हर बार बताता हूँ तुमको, Socrates वाला. ठीक है. So let us come to the S part. S is for site. अरे नाम में ही है chest. So just ignore the site वाले heading. ठीक है. Doesn't make any sense. Topic is chest pain है, so of course site is chest. ठीक है.
So ignore S. Let us come to O. O is for onset, duration, progress. All right. I'll tell you the radiation का part later. That is very important. Before that, we'll describe the O part. ठीक है? So O में there's on progress. ठीक है? Very important. Let us get into onset का part. ठीक है? Onset is basically of two types. Basically branch it into two. Onset can be acute or onset can be insidious. ठीक है? All right. Onset can be acute or onset can be insidious. तो let us see acute किस में होता है and insidious किस में होता है. ठीक है? We'll go through the causes one by one. ठीक है? Angina, acute onset. I don't need to explain this. ठीक है? Angina is acute onset. My again acute onset. Acute में लिख दो. All right. Aortic dissection. Again, put it under acute. ठीक है? Pericarditis. Pericarditis is a slowly developing disease. ठीक है? हल्के से आता है. Put it on the insidious. Pericarditis को insidious में डाल दो. ठीक है? Pneumothorax suddenly develops. Acute onset. All right? Pneumothorax is acute onset. Pulmonary embolism. Again, suddenly develops. Again, put it under acute onset. Hmm? Pneumonia. Pneumonia का पेन suddenly develop नहीं होता है. It develops over a period of 4 to 5 days. ठीक है? So we'll put it on the insidious onset. ठीक है? The person cannot exactly pinpoint मुझे पेन कब start हुआ pneumonia में. All right? ठीक है? Effusion same thing. Pleural effusion में pleura का irritation होता है, but it does not develop suddenly. It develops over a period of 1 week, 2 weeks. And in case it is tuberculosis, pleural effusion, so that will develop over months. ठीक है? So again, pleural effusion, put it on the insidious. ठीक है? Let us come to GIT causes. Borav syndrome. I don't need to explain this. Esophageal rupture अचानक से होता है. Put it under acute. All right. Put Borav syndrome under acute. Esophageal spasm again अचानक से start हो जाता है. Put it under acute. ठीक है? Gastroesophageal reflux disease. Insidious. ठीक है? Now the thing is GRD का पेन इतना severe नहीं होता है. ठीक है? And the person is just like आता है जाता है आता है जाता है. But you cannot pinpoint when it exactly comes. ठीक है? So we'll place GRD under insidious onset. ठीक है? तुम खाना खाओगे 2-3 घंटे बाद पेन स्टार्ट होगा धीरे धीरे. Not acute is what I'm trying to say. Again, peptic ulcer disease, same thing. You have very blunt abdominal and chest pain. You cannot pinpoint when it exactly comes, when it exactly. Yeah. So peptic ulcer को भी insidious onset में डाल दो. ठीक है? चलो, we are done with onset. Let us come to duration. Duration is nothing. Duration is basically how long your pain has been going on for. ठीक है? Nothing much to describe it. So duration में just लिख दो how long has your pain been going on for. ठीक है? It's nothing to describe it. Let us come to progress. Progress is very, very important. Okay? Progress is very, very important. I want you to make 4 columns in progress. Okay? I want you to make 4 columns in progress. सबसे पहले कॉलम में लिख दो इंटरमिटेंट. आता है जाता है आता है जाता है कम्स एंड गोस कम्स एंड गोस कम्स एंड गोस. ठीक है? फर्स्ट कॉलम में लिख दो इंटरमिटेंट. सेकंड कॉलम में लिख दो द पेन विल पीक एट द वेरी बिगिनिंग. द पेन इज एट इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग द वेरी स्टार्ट और उसके बाद पेन कम होने लगता है. ठीक है? डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सेकंड कॉलम में लिख दो द पेन विल पीक एट द वेरी स्टार्ट. मतलब पेन मैक्सिमम लिमिट है वो स्टार्टिंग में ही मिलता है. उसके बाद द पेन स्लोली स्लोली सबसाइड्स, रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल. ठीक है? पुट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है? पुट इट इन योर ओन वर्ड्स. पेन पीक्स एट द स्टार्ट एंड देन स्लोज डाउन. ठीक है? सेकंड कॉलम. थर्ड कॉलम में लिख दो स्टैटिक. सेम का सेम रहता है. ठीक है? राइट डाउन स्टैटिक. एंड इन द फोर्थ कॉलम आई वांट यू टू राइट डाउन प्रोग्रेसिव. ठीक है? प्रोग्रेसिव keeps on increasing if you don't have any treatment. All right. चलो, let us put all these causes into the different blocks now. ठीक है? We'll again go in the same order. चलो, serious causes में angina. ठीक है? Now, if a person is having angina, assume I'm a patient of angina. I exercise, I get angina, it goes away. Again, when I get emotionally charged up, I get angina. When I rest, it goes away. ठीक है? When I'm going to the grocery store, again I'm exerting myself, it comes. ठीक है? When I rest, it
So angina का pain is intermittent, आता है जाता है, comes goes, ठीक है. So we'll put it under intermittent. angina के pain को intermittent में डाल दो. All right. ठीक है. Let us come to myocardial infarction. ठीक है. Myocardial infarction का pain is progressive. I mean, if you are not intervening in myocardial infarction, good chance the person will just die. ठीक है. All right. Myocardial infarction. That is progressive in nature. ठीक है. See, myocardial infarction का pain is progressive in nature, but myocardial infarction का pain it subsides within 2 or 3 days. ठीक है. In case assuming the person survives. ठीक है. But in general we call it progressive type of pain because those 3 days का जो interval है उसमें pain बहुत बढ़ता रहता है. At least until day 2. ठीक है. So when the patient will come to you, वो तुमको बोलेगा कि दर्द बढ़ते जा रहा है. ठीक है. So we put it under progressive generally. ठीक है. Aortic dissection. The pain peaks at the very beginning. उसके बाद subside होता है. ठीक है. Put it under the second column जिसमें तुमने लिखा है the pain peaks at the very start. ठीक है. Aortic dissection का pain is maximum at the very beginning. उसके बाद थोड़ा better होना start हो जाता है. ठीक है. Pericarditis. Put pericarditis under static. ठीक है. It is a very blunt type of pain. हल्का हल्का सा. Remains constant throughout. ठीक है. Doesn't increase, doesn't decrease. ऐसे का ऐसे ही रहता है. Alright. So put it under static pericarditis. Alright. Let's come to pneumothorax. RS में. Well, pneumothorax में if you're not intervening, it's a problem. ठीक है. Because pneumothorax की वजह से air बढ़ता रहता है pleural space में. The lung keeps on compressing. Pain will keep on increasing. The breathlessness will keep on increasing. So place pneumothorax on progressive. Alright. If you don't intervene in pneumothorax, air अंदर जाता रहेगा pleural lining में. It will keep on compressing the lung. Greater is the compression of the lung, more is the amount of pain. ठीक है. So put pneumothorax under progressive. Alright. Pulmonary embolism. Pulmonary embolism का pain peak beginning. उसके बाद relief होना start हो जाता है. Put it under the second column. Put pulmonary embolism in the second column. The pain peaks at the very start. ठीक है. All right. Now the next two causes, pneumonia and pleural effusion. Now the thing is, ये थोड़ा ग्रे जोन है because if तुम्हारा pneumonia and pleural effusion is kind of mild in nature, ठीक है? The pain can be static, ठीक है? But if pneumonia and pleural effusion severe हो गया तो it will have progressive pain, ठीक है? So what do you guys do? तुम लोग थर्ड और फोर्थ कॉलम के बीच में लिख दो इसको, ठीक है? Just to signify that it can be either of the two, ठीक है? So I won't pinpoint it specifically. Pneumonia and pleural effusion third और fourth column के बीच में लिख static and progressive. ठीक है. It can be a bit of both depending on the severity. Alright. Let us come to GIT causes. Gorov syndrome. I mean तुम्हारा esophagus rupture हो गया. The person is going to die. ठीक है. Esophagus leak हो रहा है तुम्हारा. The person is going into mediastinitis. It's an emergency. Alright. Pain. It's a very painful condition. It's a very progressive type of pain. Put it under progressive. Borov syndrome. Put Borov syndrome under progressive. ठीक है. Esophageal spasm. आता है जाता है. Comes and goes. You have food, you have spasm. You're not doing anything. Suddenly esophageal spasm हो जाता है for no reason. ठीक है. So put it under intermittent. Alright. Put it under intermittent. Esophageal spasm कभी भी आ जाता है. I mean, there's no specific reason for it. ठीक है. And it gets relieved on its own as well. तो उसको intermittent में डाल दो. Gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. Yeah, GRD is intermittent in nature, of course. तुम खाना खाओगे तभी आएगा GRD का पेन. Or like when you're sleeping तो reflux होगा, ठीक है? Gastroesophageal reflux disease intermittent. You have it like twice a day, thrice a day or whatever. जितने भी बार होना है हो जाता. But then you take antacids and stuff, it gets relieved, ठीक है? So put GRD under intermittent. You can put peptic ulcer disease as well in intermittent category. ठीक है. कभी कभी पेन आता है, कभी कभी जाता है. It's not there all the time. ठीक है. Person will complain to you that खाना खाने के बाद पेन ज्यादा हो रहा है मुझे. If I'm drinking some alcohol. What if you don't medicate and what? Which condition? अरे antacid के बिना भी रिलीव हो जाएगा ना. So many people come to the OPD with gastroesophageal reflux.
के बाद they have some pain. After that it gets relieved after 1 or 2 hours. No big deal. ठीक है. That's a very common condition. डॉक्टर्स बोलते हैं एसिड्स लो. दैट्स द सेम थिंग. GERD ही रहता है वो. ठीक है. So both GRD and peptic ulcer disease, ठीक है, put it under intermittent. Yeah, every time HCl थोड़ी निकल रहा है. Yeah, that's right. So put it under intermittent. All right, we are done with ODP as well. SOC. चलो, let's come to character. ठीक है, this part is important. Let's come to character. I'll give you guys half a minute to catch up on what you've written. Okay, I'll just hold for 30 seconds. All right, I'll move on to character now. कैरेक्टर में क्या बताना है. ठीक है. राइट इट डाउन. ठीक है. प्रेसिंग. ठीक है, लिख दो. जस्ट राइट डाउन व्हाट आई एम टेलिंग यू इन द सेम फॉर्मेट. प्रेसिंग, PRESSING, स्लैश ग्रिपिंग, GRIPPING, ग्रिपिंग, स्लैश क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग, स्लैश टाइटनेस. ऑलराइट, टाइटनेस. I'll repeat myself. प्रेसिंग और ग्रिपिंग और क्रशिंग और टाइटनेस वाला पेन. What does it seen in? जल्दी लिख दो. It is seen in myocardial infarction, angina और esophageal spasm. ठीक है. This is how patients will describe you. पेन ऐसे हो रहा है. ठीक है. ग्रिपिंग, क्रशिंग और टाइटनेस वाला पेन. मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना और esophageal spasm. ठीक है. सेकंड वाला लिख दो. टेयरिंग ऑफ पेन. टेयरिंग, TEARING, पेपर फाड़ने वाला. टेयरिंग, टेयरिंग टाइप ऑफ पेन. ठीक है. एओर्टिक डाइसेक्शन, ओनली वन कॉज. एओर्टिक डाइसेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. राइट डाउन एओर्टिक डाइसेक्शन. ऑलराइट. थर्ड वाला लिख दो. शार्प स्टैबिंग पेन विच इज प्लूराइटिक इन नेचर. शार्प स्टैबिंग पेन विच इंक्रीजेस विद इंस्पिरेशन एंड रिलीव्स ऑन एक्सपिरेशन. ठीक है. Sharp stabbing pain which increases on inspiration and relieves on expiration. Basically, sharp stabbing pleuritic. ठीक है. ये मैंने pleuritic last 2 सेशन में मैंने बोला तुमको. ठीक है. All respiratory causes, all four of them, all four of them. But there's one more. Pericarditis भी डाल दो pleuritic type of pain में. I'll tell you the reason why. ठीक है. This is a violation. Some examiners like to ask this. पेरिकार्डाइटिस में क्यों प्लोराइटिक पेन मिलता है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन पेरिकार्डाइटिस. ठीक है. पेरिकार्डाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट. सो व्हेन यू इंस्पायर, आई होप यू गाइस नो द रेस्पिरेटरी साइकिल. व्हेन यू इंस्पायर, प्रीलोड बढ़ जाता है राइट साइडेड चेंबर्स. ठीक है. व्हेन यू इंस्पायर, ठीक है, डायफ्राम पुशेस डाउन, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक है. उसकी वजह से प्रीलोड टू द हार्ट इंक्रीजेस. Preload to the heart increases, heart के chambers dilate, heart के chambers hit the pericardium, which is already inflamed and irritated. उसकी वजह से इंस्पिरेशन में पेरिकार्डाइटिस का पेन बढ़ जाता है. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है. यू इंस्पायर, दैट डाउन, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेस, preload to the heart increases, right sided chambers dilate. Once right sided chambers dilate, they hit the pericardium, which is already inflamed. पेरिकार्डियम का इरिटेशन हो जाता है, उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस होता है. सॉरी, उसकी वजह से प्लूराइटिक टाइप ऑफ पेन हो जाता है. ऑलराइट, डोंट फॉरगेट पेरिकार्डाइटिस. फाइन.
So sharp stabbing pleuritic type of pain and pericarditis and all respiratory causes. ठीक है? And finally, burning type of pain. Burning, burning, burning type of pain. ठीक है? Simple gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. इसमें सामान्य जैसा नहीं है कुछ. It's called heartburn for a reason, है ना? Heartburn. Burn is burning type of pain. ठीक है? Burning type of pain, gastroesophageal reflux disease, and peptic ulcer disease. All right, fine. All right, we are done with character. I think. Yes, we are done with character. Chalo, let us come to the most important part: radiation. Okay, this is something that you should never forget. Okay, uh, very important. We are done with SOCR. Yeah, we are coming to radiation. Radiation. Okay. All right. See, when I say radiation, I'm basically referring to सब में chest pain तो हो रहा ही है. What type of pain has Bohr have? मुझे नहीं पता actually. It's not given clearly in books. The causes that I haven't mentioned are the ones I'm not clear with. ठीक है? So I'm avoiding speaking about them. ठीक है? I'm searching Bohr syndrome का pain, but it's not given properly anywhere online. So just ignore whatever I haven't said. ठीक है? I tried to cover most of the causes. ठीक है? But let them be for now. Alright, we are coming to radiation, right? So when I refer to radiation, देखो भाई chest pain तो सब में ही हो रहा है, ठीक है? I'm referring to areas other than chest now, ठीक है? Alright, जल्दी लिख दो. Radiation to the arm and the shoulder, ठीक है? The first category is radiation to the arm and the shoulder. Arm plus shoulder. Alright, जल्दी लिख दो. Serious causes में angina, myocardial infarction and pericarditis. Please, for the love of God, don't write down aortic dissection. Please, ठीक है? Write down angina, write down myocardial infarction, write down pericarditis. ठीक है? Don't write down aortic dissection. Don't, please. ठीक है? Alright. Respiratory causes of pneumothorax है, that radiates to the arm and the shoulder. Alright. Respiratory causes में pneumothorax. Pneumothorax is the only one among respiratory causes that radiates to the arm and the shoulder. ठीक है? And in GI causes esophageal spasm है, that radiates to the arm and the shoulder. ठीक है? Only esophageal spasm. I'll repeat myself. Radiation to the arm and the shoulder. In addition, CVS में MI, angina and pericarditis. All right. Aortic dissection मत लिखो, फेल हो जाओगे एग्जाम में. ठीक है? Pneumothorax and RS and esophageal spasm under GIT causes. ठीक है? All right. Chest pain radiating, chest pain which also radiates to the back, 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 between shoulder blades. ठीक है? Chest pain radiating to the back, your second category. ठीक है? All serious causes, all of them. MI, angina, pericarditis, aortic dissection, all of them radiate to the back. ठीक है? इसमें aortic dissection को स्टार मार्क करो, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड इट, हाईलाइटेड, व्हाटएवर यू वांट. ठीक है? ऑलराइट? ठीक है? Why am I telling you this? ठीक है? Now, once I list down all the radiation के categories and you read it once again, you'll notice that aortic dissection का जो pain है, that is only felt between the shoulder blades. ठीक है? All the other causes I'm telling you, you'll have chest pain, of course, but they'll be near the arm, shoulder, neck, throat, jaw, back, here, there. ठीक है? But aortic dissection is the only pain which is felt on the chest, of course, and it only radiates to the back between the shoulder blades. ठीक है? So that is why I highlight aortic dissection when you're writing it back के category में. ठीक है? So I'll repeat myself. Chest pain radiating to the back also, CNN, angina, myocardial infarction, pericarditis, and aortic dissection. Basically all cardiovascular causes. Okay. CVS causes, sorry, not CVS, RS causes में लिख दो pneumothorax and pulmonary embolism. ठीक है? Pulmonary embolism add हो जाता है. ठीक है? Write down pneumothorax and pulmonary embolism. Pneumothorax and pulmonary embolism. ठीक है?
See, Abhi, don't go to find logic in this. What I'm telling you, ठीक है? It's simply because certain dermatomes involved हो जाते, ठीक है? There's no logic to this. It is just something that you have to ratify, ठीक है? Even I forget these patterns sometimes. मुझे भी याद नहीं रहता. All right, nobody remembers it. In fact, except if you're a cardiologist or something. So don't go to find logic behind this. बस होता है, ठीक है? So back में RS में लिख दो pneumothorax and pulmonary embolism, and again GIT causes में esophageal spasm. Only one cause. ठीक है? Esophageal spasm. ठीक है? I'll repeat. Back में all CVS causes, RS में pneumothorax and pulmonary embolism, and GIT में esophageal spasm. ठीक है? थर्ड कैटेगरी लिख दो, द नेक, द थ्रोट एंड द जॉ. ठीक है? नेक, थ्रोट, जॉ. ठीक है? नेक, थ्रोट एंड द जॉ. ठीक है? सीवीएस में लिख दो एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड पेरिकार्डाइटिस. ठीक है? एमआई, एंजाइना, पेरिकार्डाइटिस. I know by this point you're sick of writing MI, angina and pericarditis in all categories, but the thing is इनका पेन सब जगह मिलता है. पर्सन बोला मेरे को चेस्ट पेन है, इट्स रेफरिंग टू माय आर्म एंड द शोल्डर एज वेल. मुझे शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी पेन हो रहा है, मुझे गर्दन में भी पेन हो रहा है, मुझे माउथ के पास भी पेन हो रहा है. ठीक है? तो इट्स बेसिकली स्प्रेडिंग. ठीक है? सो राइट डाउन एमआई, एंजाइना एंड पेरिकार्डाइटिस अंडर नेक, थ्रोट एंड जॉ. ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट. नो रेस्पिरेटरी कॉज एट ऑल. ठीक है? If you are having pain which is radiating to the neck, the throat, or the jaw, it cannot be a respiratory cause. Okay? It cannot be a respiratory cause. If you're even thinking of respiratory differential, you're going on a very wrong track. ठीक है? बॉक्स में बना के लिखो, नो रेस्पिरेटरी कॉजेस. ठीक है? कोई भी रेस्पिरेटरी कॉज में तुमको चेस्ट पेन रिलेटिंग टू द नेक, द थ्रोट और द जॉ नहीं मिले. ठीक है? ऑलराइट, नो रेस्पिरेटरी कॉजेस. ठीक है? एंड देन जीआईटी कॉजेस में ओनली बोरहाउस सिंड्रोम. Only Boreau syndrome, nothing else. Only Boreau syndrome. Alright? अच्छा, FQ. ठीक है, चलो मैं भी I'll pay my respect. Uh, alright, so I was saying, yeah, neck, throat and the jaw. ठीक है? CVS में myocardial infarction, angina and pericarditis. No respiratory causes at all. No respiratory causes. And GIT causes में Boreau syndrome. ठीक है? And the last category, chest pain radiating to the abdomen as well. Abdomen. Near your umbilicus and all. ठीक है? Abdomen सिर्फ दो ही है. There's esophageal spasm and there's peptic ulcer disease. ठीक है? Simple. There's peptic ulcer disease and there's esophageal spasm. Only two causes: chest pain radiating to the abdomen, peptic ulcer disease, and esophageal spasm. All right? Fine. Guys, take 2 minutes का break. ठीक है? I'll be back. तब तक you guys catch up on notes or whatever. मैं आता हूँ within a minute or two.
Yeah, guys, I'm back. Chest pain doesn't radiate for pulmonary. हाँ सी प्लूरल एफिशिएंसी और निमोनिया का पेन नहीं रेडिएट होता है एनीवे ठीक है इट्स जस्ट पेन चेस्ट पेन पल्मोनरी एम्बोलिज्म का होता है आई हैव गिवन इट इन बैक ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेन रेडिएट्स टू द बैक या सी द वंस आई हैवंट मेंशन डोंट रेडिएट एनीवे ठीक है इसलिए आई हैवंट रिटन देम एनीवे फॉर अ रीजन फाइन yeah we are done with S we are done with O we are done with C we are done with R let us come to A associated features ठीक है चलो very important alright so there's this person he was telling you कि मेरे को चेस्ट पेन होने के पहले मेरे को नौसिया वॉमिटिंग हुआ था आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट एंड आई वॉज हैविंग पाल्पिटेशन ठीक है और इट कैन कंटिन्यू आफ्टर द चेस्ट पेन ऑल्सो मतलब ठीक है इट कैन कम प्रायर टू द चेस्ट पेन और इट कैन कम अलॉन्ग विद द चेस्ट पेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन ठीक है ऑलराइट इमर्ज ड्यूटी में पर्सन कम्स यू विद हार्ट अटैक हाई चांस दे हैव नोजिया एंड palpitations ठीक है डोंट राइट angina don't write angina ठीक है these are the differences between angina and myocardial infarction ठीक है angina नहीं मिलता है sweating palpitations nausea vomiting ठीक है I mean मिल सकता है but very rarely ठीक है it is more common in myocardial infarction ठीक है so chest pain associated with nausea vomiting sweating and palpitations before the onset of chest pain or even once chest pain has started ठीक है think about myocardial infarction all right fine all right now if the person was giving you complaints of dyspnea, orthopnea, PND, palpitations, chest pain, ankle swelling, prior to the onset of chest pain, ठीक है? I mean dyspnea, orthopnea, PND, palpitation, ankle swelling, ठीक है? What is this? If the person gives you these complaints, these are cardiovascular complaints. And what are cardiovascular complaints? जो हमने chest pain में डाले, angina and myocardial infarction. So when you're taking history and the person tells you basically उसको history, orthopnea, PND, palpitation, ankle swelling की your mind should automatically go towards cardiovascular causes, which is myocardial infarction and angina. ठीक है? Yeah, congestive cardiac failure as well. Congestive cardiac failure की वजह से angina होता है, right? Congestive cardiac failure की वजह से angina myocardial infarction होता है, ठीक है? CHF और CCF leads to myocardial infarction and angina, है ना? लॉजिक लगाओ, ठीक है? Don't just copy down what I'm saying. Think for yourself, थोड़ा. All right? या हाँ सही है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ही है बट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का एंड स्टेज पैथोलॉजी क्या है द हार्ट इवेंचुअली गिव्स अप और तुमको एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना सो योर क्लू शुड बी गोइंग टुवर्ड्स दैट ठीक है जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ठीक है फाइन नेक्स्ट थिंग एसोसिएटेड फीचर व्हिच कैन फाइन वेरी सिंपल खाने के बाद बार बार चेस्ट पेन हो रहा है ठीक है I'm eating food, I'm having chest pain. I'm having breakfast, I'm having chest pain. I'm having lunch, I'm having chest pain. I'm having dinner, I'm having chest pain. Gastroesophageal reflux disease and esophageal spasm. Or peptic ulcer disease as well. Yeah? Three causes. तुम GIT causes लिख सकते हो in general. Not an issue. ठीक है? You can write down GIT causes. Except Borau. ठीक है? Except Borau, all three GIT. ठीक है? Write down all GIT causes except Borau. In chest pain after meals. ठीक है? Important. This is very 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 important. ठीक है? Person comes to you with chest pain, ठीक है? And then he's like, I'm having some blurring of vision, ठीक है? I'm having some blurring of vision, ठीक है? Very important. Can anyone guess क्या हो सकता है? Just down if you guys have an idea. Chest pain associated with blurring of vision? No, no. I'm asking मेरे specific causes के list में से. From the causes of the list I've given, उसमें से क्या हो सकता है? Chest pain associated with blurring of vision. Anyone who answers gets a piece of my internship का money. No, no. Yes, चलो Spyro gets some money.
from my side. It's aortic dissection. Aortic. I'll tell you guys the logic behind this. ठीक है? Aortic dissection हो गया. ठीक है? A part of your aorta has been torn. ठीक है? Intima media की lining tear हो चुकी है. ठीक है? Now the thing is, this part usually happens in the arch of aorta. ठीक है? You have the aorta के three parts. Right? Descending aorta, there's arch of aorta, and then there's descending aorta. Sorry, what I meant to say is ascending aorta, arch of aorta, descending aorta. ठीक है? So aortic dissection जो है most commonly happens in the arch of aorta. ठीक है? And what vessels originate from the arch of the aorta? The ones that go to your head. ठीक है? The ones that supply your brain, the ones that supply your eyes and all. ठीक है? So due to damage to the arch of aorta, the blood supply to your eyes and your brain gets impaired. Brain को इतना impair नहीं होता because वहाँ circle of Willis है, उस वजह से collaterals है. So that's not a big issue. But the blood supply to your eyes gets slightly hindered. ठीक है? और उसकी वजह से blurring of vision होना start हो जाता है. ठीक है? या हाँ, टोबी वाज राइट. इंटरनल कैरोटिड और फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी. मुझे इतनी एनाटॉमी याद नहीं आ रही है, बट दिस इज इट. ठीक है? सो एओर्टिक डाइसेक्शन मोस्ट कॉमनली अकरिंग इन द आर्च ऑफ एओर्टा. आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से कॉमन कैरोटिड आती है वाट. ठीक है? कॉमन कैरोटिड डैमेज, इंटरनल कैरोटिड डैमेज, इंटरनल कैरोटिड डैमेज, ऑप्थेल्मिक आर्टरी डैमेज, ऑप्थेल्मिक आर्टरी डैमेज, ब्लरिंग ऑफ इट. ठीक है? ऑलराइट, आई थिंक यू गाइस अंडरस्टूड. सो आई विल मूव ऑन. ठीक है? एंड देन एसोसिएटेड फीचर्स में कफिंग एंड व्हीजिंग. Come on, guys. RS causes, respiratory causes. ठीक है? Chest pain associated with coughing, chest pain associated wheezing, any respiratory cause. Four of them. कुछ भी हो सकता है. ठीक है? This is a formality question. ठीक है? I mean, it's pretty clear. You guys will catch up on. There's nothing special in this. ठीक है? All right. Coughing, wheezing, CNN respiratory causes. Chest pain associated with coughing or wheezing, respiratory causes. ठीक है? So we are done with S O C R A T. T is same as timing. वो मैं हर बार बोलता हूँ. It is same as ODP. So we'll ignore T वाला heading. All right. Let us come to E. Exacerbating and relieving factors. ठीक है? Let's exacerbating and relieving factors. ठीक है? Chest pain worsening during cold weather. Worsening on exercise. Worsening on exertion. Worsening during emotional states. ठीक है? I'll repeat. Chest pain worsening during cold weather. Chest pain worsening on exercising. Chest pain worsening on exertion. Chest pain worsening on emotion. Alright? Myocardial infarction and angina. ठीक है? Simple. Cardiac output बढ़ेगा, myocardial infarction precipitate होगा या angina precipitate होगा. I don't think there's any need to explain. Yeah, if anyone has any doubt, cold weather में क्यों बढ़ जाता है? ठीक है? Can you say what? हाँ, final repeat. Chest pain worsening during cold weather or during exercise or during exertion or during emotional states. ठीक है? Myocardial infarction and angina. If anyone has any doubts, cold weather में क्यों होता है? Cold weather में in order to conserve heat, body के vessels का vasoconstriction हो जाता है. Once there is vasoconstriction, afterload बढ़ जाता है heart का. The amount of force against which the heart has to pump out increases. That is the yeah? And since the amount of pressure that the heart has to pump against increases, myocardium का oxygen demand बढ़ जाता है. उसकी वजह से it can precipitate angina. All right? Simple explanation. Cold weather का. ठीक है? Fine. All right. Now this is important. ठीक है? Chest pain which increases on lying supine, but which is relieved on stooping forward. ठीक है? I'll repeat myself. Chest pain which worsens when you lie down or supine, and chest pain which is relieved on stooping forward. ठीक है? Pericarditis. What is this hashtag का thing you guys are doing? No. But just write down pericarditis. ठीक है? I'll repeat myself. Chest pain which worsens on lying down, supine, but which increases on stooping forward. I'm so sorry. Chest pain which increases on lying down,
but relieves, gets relieved on stooping forward. ठीक है? Pericarditis. All right. चलो चलो. Chest pain which worsens on hot drinks and alcohol. All GIT causes. Spyro reason मुझे नहीं पता. I'm not sure. Reason का I have no idea. I just read it. Exactly. Might be related to dermatomes of pericardium or something. मुझे exact cause नहीं पता. Maybe you guys can Google and find it somewhere and tell me later. But मुझे नहीं पता. And yeah, chest pain worsening on hot drinks and alcohol all causes. Self-explanatory. Nothing to tell you. ठीक है. And then chest pain which is relieved on NSAIDs and glycerin. ठीक है. Chest pain which is relieved on NSAIDs and nitroglycerin. Very simple. Myocardial infarction, angina or esophageal spasm. Because these are conditions where muscle का contraction हो रहा है. ठीक है. These are conditions where muscle का contraction हो रहा है. ठीक है. Alright, so chest pain is relieved on NSAIDs and nitroglycerin, myocardial infarction, angina and esophageal spasm. Alright. हाँ, all GIT causes मतलब बोरा मत डाल दो. ठीक है. Don't put बोरा. बाकी तीनों डाल दो. ठीक है. नहीं, MI पेन होता है, NSAID से रिलीव होता है. It does get slightly relieved. It does get slightly relieved. मॉर्फिन तो इसमें है. मॉर्फिन इज अ आइडियल ड्रग. ठीक है. NSAID से थोड़ा पेन रिलीव होता है. ऑलराइट. फाइन. सो पेन विच इज रिलीव्ड ऑन NSAIDs and NTG. MI angina esophageal spasm. ठीक है. On question past history में पूछना है. ठीक है. If anyone answers this, again I'm giving them a piece of my internship का money. ठीक है. Try to answer this. ठीक है. Why will you ask past history of any cough, cold, fever, skin rash or running? ठीक है. If a person is coming to you with chest pain, ठीक है. Why would you ask for history of any cough, cold, fever, any skin rash, any runny nose? What cause are you trying to pinpoint? नहीं नहीं. From the list of causes that I've given, try to pinpoint it. What can it be? अरे नहीं नहीं, just pinpoint. Yeah, viral myocarditis. What? Viral myocarditis से क्या होगा? Yeah, Coxsackie. What? Pericarditis. Yes, pericarditis. ठीक है. So if a person comes to you with very stable static chest pain, ठीक है, and you're suspecting pericarditis, so pericarditis जो होता है occurs due to viruses. ठीक है. अभी I don't know the exact list of viruses. Coxsackie है, and this Coxsackie there's two or three more. I don't know. ठीक है. But of course it will be viral infection. So people usually will give history of cough, cold, fever, runny nose, skin rashes, all those prodromal viral symptoms. ठीक है. Yeah, adenovirus as well. हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी. I haven't studied it properly. ठीक है. So it doesn't matter. Viruses जो भी है करने दो उनको. ठीक है. But pinpoint the cause. Alright. Fine. So past history में any recent history of cough, cold, fever, runny nose, any viral infection, pericarditis. ठीक है. Fine. So we are done with this topic, guys. Have a good evening. ठीक है. I'll cut the call. If you guys पूछ लो, I'll try to